the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those years? 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, आई विल मेंशन ऑन द 10 years अचीवमेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन ओल्ड सिटी we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say, आपको जरा अकल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. It takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government, and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं है? I request my learned friend अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, you know, हमारा जो एमएलए साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. Ek minute. No, he didn't. No, he didn't say fail. Mr. Gentleman, I would like to say I haven't failed. No. Akbar bhai. No. He was. No. No. Sir. नहीं, अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको साहब। स्पीकर सर, ओवैसी साहब, प्लीज। No, if any member diverts, sir, just diverted. Basically, you know, it's only all the emotional issues which comes into being. So our member was just asking and questioning the TRS government, which they didn't do it. This is his context and this is his objective.
it would have gone in, it would have taken in a wrong way. And I would like to request Honorable Speaker to expunge your words what Akbaruddin Owaisi has said about the new member. What the new member, like अकल का कुछ ऐसा नहीं ठीक है भाई नहीं I am not, we are not here, we are here on a positive note. Sir, what? Please. Sir, my point here is, you know, he has seen many assemblies. No, that's fine. You know, we take everything in a very positive way. खबरदार in Urdu बोले तो cover बोले तो news information. खबरदार is nothing which is unparliamentary. KTR garu, please. Sir, Samir. you know, whatever you please examine the record, sir. Please examine the records. Whatever is unparliamentary, you can expunge it, sir. Sir, I request the honorable member also, please. He is a new member. He is a new member of the assembly. No. नहीं किससे भी मैं सर डराना हमारा फर्ज बनता नहीं होता साहब we are all the new members sir there are 51 new members in the assembly sir Please. sir देखिए सर एक काम there are 51 Please. मिनिस्टर का बात हो गया बाद आपको देंगे प्लीज there are 51 new honorable members in this assembly sir 57. So we have to respect each and every honorable member, even though they got elected for first time, or 2 times, or 3 times, or 4 times. My request to honorable member is, don't get into the total intricacies what they speak. They have just come to assembly, they were trying to express their opinions, try to understand it on the broader thing. You know, you have to accommodate everybody and try to go along with it. मौका मिलेंगे क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है कलीग मेंबर्स है एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे और तीसरी बात स्पीकर सर आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले आप माइक दिए साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था वो अलायंस पार्टनर है वो सरकार से अलग नहीं है बार यहीं से केसीआर साहब ने वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है हम लोग साथ में रहेंगे ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते वो शहर हमारे है 450 साल के शहर है वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को ये बात कहना चाहता है ये बात तो ठीक नहीं अफसोस की बात है सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए
4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो सीएम हम लोग साहब बात कर रहा है, जुबली आपको माइक दे तो माइक। से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहाँ चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहाँ कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को। इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात सर, करा मत बैठ आप हाउस को आगे में रखो सर। आप बैठिए। आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो जो बोल रहे आप हैं बैठिए, उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। बैठिए स्पीकर सर अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर। दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देख कर एमआईएम सोच कर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दिपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गजवेल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। స్పీకర్ సార్ విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వేల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది. ఈ ముగ్గురు లీడర్లు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించక మొండి బకాయిలల్లా సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఉన్నది అధ్యక్ష. ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగమే దివాలా తీయడానికి, అప్పుల పాలు కావడానికి ఈ 3 ప్రాంతాల నుంచి బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించింది. నేను ఇప్పుడు మీ ద్వారా సభ్యులను నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఇన్ని పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి, ఇంత బాధ్యతతో మాట్లాడినా, ఇంత డేటా తీసుకొని మాట్లాడినా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎస్ మా ప్రాంతాల నుంచి బిల్లు చెల్లింపులో బకాయిలు ఉన్నాయి, నేను హరీష్ రావు గారు అదేవిధంగా చంద్రశేఖర్ రావు గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ బిల్లులు చెల్లిస్తామని ఎందుకు ముందుకు రాలేదు సార్? ఇది పద్ధతే సార్? అదేవిధంగా స్పీకర్ సార్ ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అంతకంటే ముందు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయా, ఏ రైతులైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేసిండ్రా, ఏ రైతులైనా
విద్యుత్ రావడం లేదని అడిగినరా అని చెప్పి మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినరు. వారి సమాచారం కోసం నేను చెప్తున్నా స్పీకర్ సార్,